डज दिस हैपेंस विद यू? नो मैटर आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, बट स्टिल देयर इज अ डाउट इन योर सेल्फ. यू कीप आस्किंग योर सेल्फ, पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, पता नहीं मुझे एग्जाम्स में याद रहेगा नहीं रहेगा, मेरी तो एग्जाम्शन कभी नहीं आ सकती, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ जाए. यू कीप डाउटिंग योर सेल्फ, यू कीप थिंकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस, एंड स्लोली ये थॉट्स आपके बिलीव्स बन जाते हैं. नाउ यू स्टार्ट सेइंग आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, मेरा फोकस उतना अच्छा नहीं है, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ बट मुझे नहीं पता मुझे एग्जाम्स में कितना याद रहेगा, मैं कितना अच्छे से लिख पाऊंगा. एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर वीक, यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, यू आर नॉट कैपेबल इनफ. इफ yes, then let me tell you something. If you keep doubting yourself, if you keep asking question about yourself, then doesn't matter आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, आप कभी भी अपना 100% पोटेंशियल यूज नहीं कर पाओगे. बिकॉज एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, यू आर पुशिंग योर सेल्फ हार्ड, यू आर कीप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ. आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टडी, यू आर स्टडिंग इन फियर, बिकॉज आपको लगता है कि अगर मैं ज्यादा घंटे नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा. So you keep doubting yourself, you keep doubting your abilities, you keep doubting your capabilities. And आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के लिए डाउट नहीं करते हो, आप अपनी कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट पे डाउट करना शुरू कर देते हो. एंड नाउ इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स when you believe in yourself, when you trust yourself, then just listen to this. Now close your eyes, take a deep breath. Again, take a deep breath. Stay in silence for a few seconds and listen to the music. Let the music work on you and start listening. I believe in myself. Yes, I believe in myself. Even when things are not clear, even when I feel doubtful, even when I don't have all the answers, I believe that I can learn. I believe that I can improve. I believe that I can figure out things. बिकॉज सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए. सेल्फ बिलीफ का मतलब है कि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं कि मैं सीख लूंगा, मैं कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लूंगा. बिलीविंग इन माई सेल्फ डजंट मीन मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, मुझे कभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मुझे सब आना चाहिए. डाउट आना नॉर्मल है, फियर आना भी नॉर्मल है, कंफ्यूजन आना भी नॉर्मल है. बट व्हेन आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई नो आई कैन हैंडल एनीथिंग. आई बिल्ड माई सेल्फ बिलीव every time I take actions. I build my self-belief every time I show up. I build my self-belief every time I try, even when I feel unsure. Because action creates belief, not waiting to take actions. I don't want to feel confident. I start and confidence follows. Self-belief is like roots of a tree. The roots are not visible from outside, but they decide how strongly the tree can stand during storms. Same way, self-belief is not always visible, but in tough times, it holds me strong. When self-belief is strong, exam pressure cannot shake me easily. Same way, a bird sitting on a tree is never afraid that branch will break, because her trust is not in the branch. Her trust is in her own wings. She trusts her wings and her ability to fly. Same way,
I don't trust myself only when I am in perfect situations. I trust myself because I believe in myself. I believe in my ability to learn. I believe in my ability to improve. I believe in my ability to respond. I believe in my ability to rise again. So when things doesn't go as planned, that doesn't mean it's a failure. It's actually a feedback that I need to improve. If I forget something, it means I need revision. If I feel doubtful, it means I'm stepping out of my comfort zone. If I struggle, it means I am growing. So from now on, whenever situations doesn't go as planned, whenever I will feel doubtful, whenever I will feel fearful, whenever I will feel मैं नहीं कर पाऊंगा, I remind myself I can handle this because I believe in myself. I trust myself. I learn, I improve, and I grow. I don't stop because of fear. I move forward with trust. Because this is who I am. I believe in myself. Repeat after me. Come on. I believe in myself. One more time. Repeat after me. I believe in myself. Again, repeat after me. I believe in myself. Come on, one last time. Repeat after me. I believe in myself. So from now on, every time I will feel doubtful, I remind myself, I believe in myself. So always believe in yourself. Never doubt yourself, no matter what the result is. Doesn't matter आपका result कैसा आ रहा है, doesn't matter आपका attempt clear हुआ या नहीं हुआ. But you can never doubt yourself. You should never doubt yourself because वो आप ही हो जो अगले attempt में clear करोगे. And with this self-doubt, it will become very difficult for you to pass in the next attempt. Of course, you can clear the exams, but that will require more hard work. You will become more stressed. But if you start believing in yourself, slowly आपकी efficiency अच्छी होने लगेगी, आपकी productivity बढ़ने लगेगी, आपको failure handle करना आ जाएगा, आप अपनी mistakes से सीखना शुरू कर दोगे. And now with this self-belief, go back to your books and give your preparation 100% with the belief that yes, you can. Take care. Bye bye.